Hello, students. So, our today's topic is other ways to say bad in English. So, today we will be learning alternatives of word bad. हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि word bad को हम different words में कैसे express कर सकते हैं. What are the alternatives? What are the alternatives of a word bad? Alright? हम लोग पढ़ेंगे कि बैड को हम लोग और कौन से वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बोलना हो कि ये खाना जो है, आज का जो ये हमारी मील है खाना, ये बहुत बैड है, ठीक है, बहुत बैड है. सो व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स ऑफ अ वर्ड बैड. सो लेट्स continue and look at our first word. So the first word is atrocious. Atrocious. Synonym: very unpleasant, and meaning something that is in poor quality, extremely bad. Something that is in poor quality, जो quality में बहुत bad हो और extremely bad हो. So the sentence is: the food at the new cafe is atrocious. जो नया कैफे खुला है वहां पे जो फूड मिल रहा है वो बहुत अनप्लीजेंट है, वेरी एक्सट्रीमली बैड है. दैट मीन्स द फूड एट द न्यू कैफे इज atrocious. It's atrocious. So the focus on the pronunciation of a word is atrocious. Atrocious. Something that is in poor quality is extremely bad. Alright? Now proceeding forward, we have our second word is deplorable. Deplorable. Synonym: something that is unworthy. Alright? I hope कि आपको पता होगा कि worthy और unworthy के बीच में क्या difference है. Alright? So the meaning is really bad, something that is completely unacceptable. Alright? Something that is completely unacceptable. Let's look at the sentence. Poor people in big cities live under deplorable conditions. यानी कि जो गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं और बिग सिटीज में वो रहते हैं, तो वो किस कंडीशन में रहते हैं? डिप्लोरेबल कंडीशन में रहते हैं. मतलब ऐसी कंडीशन में रहते हैं जो एक अनवर्दी कंडीशन हो, लाइक उनकी कोई वर्थ ही नहीं है, वो सिटी में रहें या ना रहें, एक सेम है ये, ठीक है. So they live like in a very deplorable condition. For example क्या थी मैंने आपको? Poor people in big cities live under deplorable conditions. All right. So deplorable condition, the condition that is unacceptable, that is unworthy, it's terrible. All right, completely terrible. Now proceeding forward, we have wretched. All right, the W is completely silent in a word wretched, and how we pronounce it, it's wretched. Wretched. And the synonym is unhappy and broken-hearted. Someone is really sad, someone is really unhappy, and someone is broken-hearted. Now the meaning is in a very unhappy or unfortunate state or condition. Alright, sentence is: I felt so wretched because I thought I might never see you again. For example, आपकी friend है और वो जा रही है, मतलब इस आउट ऑफ सिटी जा रही है फॉर एग्जाम्पल, और आपको उससे मिलना है, एयरपोर्ट पे है, वो आपको उससे मिलना है, और आप लेट्स सपोज आप क्या है, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और एकदम ट्रैफिक एकदम से खुलता है और आप जाती हैं, आप उससे मिलती हैं, एकदम से आप लोग मिल लेते हैं. सो यू कुड यूज दिस सेंटेंस. इस सिचुएशन में आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं. I felt so wretched, I felt so unhappy, I felt so broken hearted, I felt so sad because I thought I might never see you again. मुझे लगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी. Alright, so the word is wretched. Focus on the pronunciation and synonym meaning in sentence as well. The synonym is unhappy, meaning in a very unhappy or unfortunate state, and the sentence is I felt so wretched because I thought I might never see you again. Alright? So, we have rotten. Alright. A lot of people might ask me that
Rotten is a word that is only used for fruits, but it's not correct. We also use the word rotten for for people as well. All right. So the meaning of a rotten word is something that is completely decayed or decomposed, and the synonym is decayed. All right. So आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी ऐड की है जिसके अंदर एक एप्पल है और वो एक साइड से पूरा रॉट हो चुका है. ठीक है. ये जो द ब्लैक एरिया दिख रहा है, this black area, it's completely rotten. All right, rotten. So something that is decayed. All right, something that is decomposed. Decomposed मतलब टूट जाना. ठीक है. छोटे छोटे पीस में स्कैटर हो जाना और वो डिकम्पोज खत्म हो जाना. ठीक है. Something that is completely decayed. Sentence: her acting skills are completely rotten. Like, for example, सेंटेंस क्या दिया है मैंने यहाँ पे, हर एक्टिंग स्किल्स आर कम्प्लीटली रॉटन. दैट मीन्स वो जब पहले एक्टिंग करती थी वो बहुत आउटस्टैंडिंगली एक्टिंग करती थी, बहुत फेमस, बहुत जबरदस्त किस्म की वो क्या हुआ करती थी, एक्टर हुआ करती थी. बट जैसे जैसे टाइम गुजरा उसकी जो एक्टिंग स्किल्स थी वो कम्प्लीटली रॉटन हो गई. लाइक उसको जंग लग गया हो. ऑलराइट. जैसे कि वो डिकेड हो गई हो, खत्म हो गई हो. ऑलराइट. So I think this is the good example sentence for you to understand. And now we have not up to snuff. Not up to snuff means not as good as it was expected. आप लोगों ने जो expect किया वो वैसा नहीं था. ठीक है. इसको हम एग्जाम्पल सेंटेंस से समझेंगे. वेल द मूवी वॉज नॉट अप टू स्नफ. वेल द मूवी वॉज नॉट अप टू स्नफ. दैट मीन्स कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मूवी बहुत थ्रिलिंग होगी, मूवी में बहुत जबरदस्त उसकी एंडिंग होगी, हीरो की जो है एंट्री बहुत जबरदस्त होगी, पूरी मैंने ये एक्सपेक्ट किया था. बट द मूवी वॉज नॉट अप टू स्नफ. लाइक जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो वैसी नहीं निकली मूवी. सो मीनिंग क्या हुई, नॉट एज गुड एज इट शुड बी. उसको अच्छा होना चाहिए था क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था. सो नॉट एज गुड एज इट शुड बी. ऐसी अच्छी नहीं रही मूवी. ऑलराइट. द मूवी वॉज नॉट अप टू स्नफ. ऑलराइट. सो there is also an alternative of this whole phrase is not up to par. Not up to par. Not up to par. P-A-R. Alright. So you could use not up to snuff, not up to snuff, or not up to par. Both having similar meanings. Alright. Not as good as it was expected. आपने जो expect किया उसके मुताबिक वो नहीं था. ठीक है. So that was the meaning and the synonym sentence of this phrase. Now we have woeful. Woeful synonym means shameful. Something that is really shameful. If someone or something is woeful, they are very bad. Alright, they are very bad. If someone कोई बहुत woeful है तो वो बहुत बुरा है. Alright, और something कोई चीज woeful है तो वो भी बहुत बुरी है. The students' grades were woeful. Alright, so you could also use the synonym of the same word, like you can change the sentence, the students' grades were woeful, or the students' grades were shameful. Alright, because as you know, the synonym को हम किस तरीके से define करते हैं? The similar meaning, the similar word. Woeful, you could say woeful or shameful. Both have similar meanings because they are synonyms. Alright, the students' grades were woeful. Alright. Now we have awful. Very unpleasant, terrible. Used to emphasize something unpleasant or negative. Sentence: I never realized how awful living all alone could be. Something that is very unpleasant, something that is terrible. Alright. और ये किस लिए मीनिंग यूज होती है? इस नेगेटिव सेंस में यूज होती है. ठीक है. ऑफुल, कोई चीज बहुत बुरी होना. ऑलराइट. ऑफुल. द एक्सीडेंट वाज ऑफुल. ऑलराइट. The sentence over here I have written is I never realized how awful living all alone could be. आप पहले family के साथ रहते थे but due to studies you shifted another city or you're living in a hostel, so you're telling your friend that I never realized how awful living all alone could be. कितना बुरा हो सकता है अकेले रहना. Alright. So awful is almost used in a negative sense. Alright, used to emphasize something unpleasant or negative. Alright, कोई चीज बुरी है. Alright.
So that's it for today. We let's overview all this. We have completed alternatives, or you could say the other ways to say bad in English. There were a lot of alternatives that includes atrocious, deplorable, wretched, rotten, not up to snuff, and awful. All right, so I hope you people enjoyed the lesson and also enjoyed the scenery behind the text. And if you like the video, so please make sure to subscribe and let me know in the comment box if you want to know more lessons related to this topic or another topic. So have a great day and Allah Hafiz.